Hello students, Assalamu alaikum. It's me Kashif Rahman, your social studies teacher. So today our topic is chapter number 1, the universe. So we will study chapter number 1, in the universe, and the topic is the Hubble telescope. Okay, we will just learn about the telescope and we'll see a short video of telescope, Hubble telescope. Okay, this is a photograph taken by. Do you know that? This is the photograph. This is the photograph taken by the Hubble telescope, which is in a spacecraft 600 किलोमीटर above the earth. यानी कि वो एक स्पेस क्राफ्ट के अंदर ये हबल टेलीस्कोप है, ठीक है। एक स्पेस क्राफ्ट के अंदर है जो कि अर्थ से 600 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। इट्स मिरर इज़ 240 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी कि उसका जो मिरर है, शीशा है, वो 240 सेंटीमीटर डायमीटर चौड़ाई में है। एंड बिकॉज इट इज़ फार अबव द अर्थ, डस्टी, क्लाउडी एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, इट कैन सी सच मोर क्लियरली इनटू आउटर स्पेस, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये अर्थ से ऊपर है। अर्थ से ऊपर होने की वजह से क्या फ़ायदा है इसको कि ये डस्टी, क्लाउडी एटमॉस्फेयर की से बाहर है अर्थ के, और स्पेस में रहकर ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर पिक्चर्स को बना सकता है। डिस्टेंसेस इन स्पेस आर सो ह्यूज दैट वी कैन नॉट मेजर दैम इन किलोमीटर, कि अर्थ के अंदर जो स्पेस में जो डिस्टेंसेस है वो इतने ज़्यादा हैं, इतने बड़े हैं कि हम उसको किलोमीटर के अंदर मेजर नहीं कर सकते हैं। सो एंड एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ लाइट ईयर्स, तो एस्ट्रोनॉमर जो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं वो है लाइट ईयर्स। लाइट ईयर दैट इज़ द डिस्टेंस लाइट वो ट्रैवल इन ए ईयर, यानी कि लाइट ईयर वो डिस्टेंस है कि लाइट जो है एक साल में ट्रैवल करेगी। लाइट की जो टोटल ट्रैवल करती है वो है 299 मिलियन मीटर पर सेकेंड, के 299 मिलियन मीटर पर सेकेंड के हिसाब से लाइट ट्रैवल करती है। सो दिस इज़ वेल ओवर 1 बिलियन किलोमीटर एन हार, तो 1 बिलियन किलोमीटर एक से ज़्यादा बनता है ये तकरीबन 1 घंटे में, विच मीन्स नियरली 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर इन अ ईयर, और 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर एक साल का बनता है। सो द हबल टेलीस्कोप हैज़ फोटोग्राफ स्टार्स एज डिस्टेंसेज 12 बिलियन ओवर 12 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। वी जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड सच डिस्टेंसेस, कि हम इसको डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये छोटी सी एक इंट्रो इसके बारे में दी है, और इसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि जिसमें आपको हबल टेलीस्कोप के बारे में शॉर्ट चीज़ें बताई हैं और उसकी खींची हुई फ़ोटोज़ और कितने डिस्टेंस उसमें फ़ोटोज़ जो है वो कैप्चर की हैं, ठीक है। ये हबल टेलीस्कोप है, तो चलिए हम देखते हैं हमारे इस वीडियो में। Let's play a game. What's the size of a school bus that travels 5 miles per second and takes some of the coolest pictures in the universe? The answer is right above you. Well, about 340 miles above you. And it's called Hubble. The Hubble Space Telescope is the most important tool that we have for understanding our universe and what our place within it is. From space, Hubble can see planets, stars, and galaxies much clearer than telescopes here on the ground. Some as far as 13.4 billion light years away. Its images have completely changed the way we think about viewing the stars. Prior to the launch of Hubble, when we thought of astronomy and telescopes, we really thought essentially of telescopes on the ground. People looking through eyepieces and things like that. No one knows exactly who invented the first telescope, but in 1610, Italian astronomer Galileo Galilei was the first to point his own homemade telescope up toward the stars. Then, more than 300 years later, astronomer Edwin Hubble used a large telescope to discover entire galaxies. The telescope itself is named the Hubble Space Telescope after Edwin Hubble, and one of these iconic images is of Edwin Hubble himself looking through one of these telescopes that you could almost mistake for the Hubble if it were in space. Instead of an eyepiece, Hubble uses digital cameras. This camera can record visible light, ultraviolet light,
and even infrared light. And scientists look forward to using Hubble to solve the mysteries of outer space. Today, demand for the Hubble Space Telescope is at a record high. Anybody in the world can write a proposal to use Hubble, and we're receiving more than 1,000 proposals every year for scientists wanting to tackle tough questions about the universe. Hubble is always doing the best science that's out there.